Trailblazers in its first season was the country's best sporting conclave. Athletes from across sporting disciplines under one roof, dialogue, discussion, debate, policy. It was an incredible gathering. Abhinav Bindra and Mirabai Chanu set the stage. Anju Bobby George, Pulela Gopichand, Neeraj Chopra, Nikhat Zareen, all of them took it forward. Vinesh Fogart and Sakshi Malik spoke openly about the wrestling issue. Policymakers like Adil Sumariwala and Kalyan Chaube pitched in. It was a fabulous effort. But this time round, 2024, the big year for Indian Olympic and Paralympic sport, with Paris 2024 in July, August, September, we have to go bigger. So Trailblazers 2.0, making the formal announcement today, 7th and 8th March 2024 at the ITC Royal Bengal in Calcutta. From a day-long conference, it is now a 2-day conclave. 25 plus athletes physically under one umbrella for the first time in India. We will also have some legends like Satwik Akchirag on a link from France at that point. Athletes like Abhinav Bindra, Pulela Gopichand, Vishwanathan Anand, Saurav Ghoshal, Saurav Ganguly, incredible names. Among women, we will celebrate International Women's Day with Anju Bobby George, Nikhat Zareen, Manasi Joshi, and the list goes on. When we are talking about able-bodied, we will also talk about para. Krishna Nagar, Suhas Yathiraj, Sumit Antil, Pramod Bhagat, Yogesh Kathunia, and of course, Manasi Joshi highlight our para-athletes. Like I said, every sport represented. Within a week from then, India will play its World Cup qualifiers, so we will have coach Igor Stimac with us. Trailblazers 2.0, a Rev Sports conclave, will be the defining sports conclave for 2024. Just look back at some of the moments from Trailblazers in its first year. ओके सर, मुझे लगता है जी कि होपफुली इस साल ये क्वेश्चन बंद कर दिया जाएगा क्योंकि सब मेहनत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि इस बार अच्छे अपने परफॉर्मेंस देंगे और ये क्वेश्चन बंद कर देंगे हमेशा के लिए और आगे की तरफ नजर करेंगे, फिर आगे क्या डिस्टेंस होने वाला है। तो बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे और बस हम ये आप क्वेश्चन बंद कर दोगे, हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट ईयर आप दोबारा ओलंपिक गोल्ड जीत रहे हो कि नहीं, नया सवाल पैदा कर देंगे आपके लिए। हम लोग आपको छोड़ने वाले हैं। सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 90 मीटर वाला मैं वो बोल रहा हूँ कि ये एक सवाल जो काफी सालों से मुझे 2018 से चला हुआ है, तो ये एटलीस्ट ये बंद होगा। बाकी तो हाँ, वो तो ओलंपिक गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, ये तो बिल्कुल है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। Thanks to Boria for this idea, because bringing all these athletes together is a big task. And see, we are actually we are here to discuss the today's problems and the obstacles what we came through and how we overcome all these things, and the future of Indian sports and women sports. So there are many aspects actually we are discussing here today, and all these things actually is a study material for the next generation. And I'm really happy that I'm also a part of this, and it's going really well. So I'm happy to be here. और 18 साल से मैं देख रही हूँ, मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ लड़कियों के साथ मिसबिहेव, अपने रेसलिंग कैंप्स में देख रही हूँ। और हमने अब इतनी हिम्मत जुटा कि ये काम किया है। आप देखिए कौन कौन वहाँ बैठा था, ओलंपिक मेडलिस्ट से लेके हर एक मेडलिस्ट वहाँ बैठा था। क्या हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म वहाँ जाके हम झूठ बोलेंगे क्या? अपना करियर दाव पे लगा के, अपनी जान दाव पे लगा के हम वहाँ सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे हैं? तो अभी ये बातें आगे आती है ना कि प्रूफ होना चाहिए, वरना तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मन टूट जाता है कि इतने सालों की हिम्मत जुटाई है और फिर प्रूफ मांग रहे हैं और फिर भी फैसला हमारे हाथ में नहीं आया, तो फ़ायदा क्या हुआ? मेरा सिर्फ उस प्रोटेस्ट पे बैठने का मतलब यही था कि ठीक है, मेरा करियर मैं लास्ट 2024 तक ट्राई कर लूँगी, लेकिन मैंने देखा है रेसलिंग कैंप में, लड़कियों के कैंप में लड़कियों का स्ट्रगल, मेरा खुद का स्ट्रगल 18 साल का। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे को आज छुड़वा दो रेसलिंग, ठीक है, मैं सब्र करके बैठ जाऊंगी, लेकिन जो आने वाली यंग रेसलर्स हैं, मेरा सिर्फ एक था कि मैं जो मेरे साथ हुआ है, जो औरों के साथ हुआ है, वो आगे आने वाले रेसलर्स के साथ ना हो।
what really worked for me, or what changed for me, was when I stopped chasing self-belief and I started chasing self-respect. And that was a very defining moment in my career. Today, there's a lot more media attention, there's a lot more social media, there's a lot more people involved in the sport, whether it's sponsors, managers, NGOs, federations, sometimes judiciary, politicians. There's too many people involved. So at the moment I get up in the morning, I say I've done what I have to do over the years. I get up in the morning, do the best of what you can do, just stay happy, and then push in the things which you can push, and forget about the things which you cannot change. जब भी मैंने गेम्स शुरू किया था, तब से मेरा सपना थी एशियन गेम्स में मेडल लेना। तो 2018 में मैं मिस हो गई थी कि बैक इंजरी के कारण मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, पर इस बार होने वाले हैं एशियन गेम्स। मैं इसमें पूरा कोशिश करूंगी मेरी तरफ से। पर्सनल रोल नेशनल कैंप में रहा है बच्चों को ये बिलीव कराना कि जो अनफेयर मीन्स हैं उसे यूज़ करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम बिना अनफेयर मीन्स के अच्छे टारगेट्स वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। So what are we going to discuss? First and foremost, the winning mentality. What takes to get that decisive 1%? We do the 99% well. 10 wins in the Cricket World Cup is an example. That decisive 1% that Abhinav Bindra speaks about. We want to be, we need to be, our athletes need to be perfect in an imperfect day. How does one do that? We will get our legends to speak about it. How does one handle pressure of the Olympic and Paralympic stage? How do you deal with adversity? What is preparation like? How do you mentally deal with preparation? Mental health, one of the most important subjects of our time. Women's health, yet another subject that is not so much discussed. Parasport, celebrating disability. What are the requirements of our parasporting athletes and where we can still contribute? We will come out with a white paper as well. Each of these themes, corporate involvement in Indian sport, policy, all of this will be discussed in Red Trailblazers 2.0. Predominantly, my whole journey has kind of been on my own, where I have had to travel on my own without a coach, without a physio. And I think those things make a huge difference in, you know, playing at the best level consistently, because a lot of other players and their countries kind of send them with a coach, send them with a physio. सब बहुत ज़्यादा ओलंपिक से पहले हार्ड वर्क कर रहे थे, तो उस टाइम पे मतलब मेरे पापा भी चले गए, तो वो टाइम पे ये था कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। तो मैंने चॉइस किया था कि मुझे टीम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, तो टीम के साथ रहना है और खेलने जाना। तो वो टाइम ये था कि मेरा ओलंपिक भी मिस हो सकता था। The one important thing to win medals in all sports and Olympics is all sports should be supported equally, because whenever after Olympics the sports which won medal there, they get the highlight and it's all been showing there and the full support has been given there. But what about the other sports? That has to be given the same support to win medal in the next Olympics. The culture is developing in India. आप रेडी हो कि मैं ओलंपिक मेडल जीत सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेस्ट चल रहा है, और अचानक आपको एक मैसेज आता है कि आपका ओलंपिक में इवेंट नहीं है, रियली बहुत दुख होता है। और जब मेरा 8 में इवेंट नहीं आया तो मुझे अफसोस हुआ कि आना चाहिए था, मेरा क्यों नहीं आया। लेकिन जब मुझे 12 में पता चला कि अब इवेंट लंदन पैरालंपिक्स में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था अब क्या किया जाए। तो ये 10 की बात थी, दीपा जी ट्रेनिंग करती थी उस टाइम। मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी मेरी लाइफ में, भले ही मेरा इवेंट ना आया हो आगे ओलंपिक्स में। तो उस समय एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि क्या किया जाए। तो फाइनली उसमें मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट की मुझे, और मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं आपको गेम करना चाहिए। और सिर्फ मेरे गेम के लिए उन्होंने अपना खुद का गेम छोड़ दिया था। उन्होंने नेशनल खेला था कबड्डी में कि नहीं आप 16 तक भी खेल सकते हो। तो जब मैं 16 में मेरा इवेंट आया
और जब 13 की बात थी, 2013 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल लिया और चैम्पियनशिप का नया रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं 20 साल से एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है जिसमें आपको घर पे भी नहीं रहना होता है, फैमिली के साथ कभी नहीं रह सकते आप। तो इस पूरी लाइफ को देखता हूँ एक जगह जा करके, तो ऐसा सोचता हूँ कि कहीं न कहीं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लाइफ में, और लास्ट जो समय होता है उस तक आपको संघर्ष करना चाहिए। A conclave of this scale cannot be done without corporate backing. Absolutely delighted to say that we have Tata Steel back as our presenting partners. A very sincere thanks to Shri TV Narendran, Shri Chanakya Chaudhary and everyone at Tata Steel. I'm very, very pleased to announce that AGS Federal Life Insurance, our partners since day one, are back for the conclave. Again, I'm very pleased to say Coca-Cola India and Arnab Roy in particular have been super supportive of every initiative of ours. Coca-Cola India, Thumbs Up and Limca Sports are part of the conclave as well. We have Wow Momo, we have Bharat Serum and Vaccines led by Sanjeev Navangul, again our partners from our first year, all back to supporting the conclave. We have some new partners as well. Globe Air Services join us as travel partner. Ganges Jute join us as associate partner. Nemichand Bamalwa join us as prize partner. Flutterwave join us as PR partner. Orion Graphics will be our event partner. We have ITC Royal Bengal as our hospitality. Several other sponsors are also joining us, like Pebble smartwatches, for example. They are now going to make a special edition Pebble watch for our conclave. New sponsors are also on the way. We will keep making announcements over the next couple of months, but what I can tell you is the support that we have received from corporates have been absolutely brilliant. So watch out for Trailblazers 2.0.